ज़रा स्टार्ट करो ये वाले क्वेश्चन से। 23। When a guitar string is plucked, it causes a longitudinal sound wave in the air as shown. The speed of sound in the air is 340 meters per second. What is the approximate frequency of the sound wave shown? अच्छा अच्छा, देखो बेसिकली ये पूरी जो चीज़ें, पूरी जो वर्कशीट है, ये सारी की सारी रिलेट होने वाली है सिर्फ तुम्हारी जनरल वेव से। ओके, जनरल वेव बोले तो जो ओलेज में पढ़ा सही। तो वी को एफ लैम्डा स्ट्रेट अवे लगेगा, वी को एफ लैम्डा। सही हो गया। स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज गिवन 340, राइट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपसे तलाश करनी है। लैम्डा निकाल सकते हो क्या पिक्चर देख के? यस। 0.5. 0.5, ओके फाइन। क्योंकि वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन a compression, distance between two compressions, या distance between one compression and one rarefaction complete। सही हो गया, वेरी गुड। सो आपके पास आ जाएगा, कितना आ रहा होगा? 340, 480 आ रहा होगा। नहीं, 600, 680 आ रहा होगा। 680 भी हो गया, सही हो गया। चलो, सही ना समझा? Yes, sir. अच्छा जी, आगे आ जाए, ये कर लो। A surveyor's device emits a pulse of light. The light is reflected from a wall 150 meters away. What is the time taken for the pulse to travel from the device to the wall and then back to the device? प्योर हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन है प्योर। सही है, ऐसा आ रहा है। एंड 150 मीटर अवे, 150 मीटर अवे। ओके, सो और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है इन द एयर? रिमेम्बर, 3 एक्सपोनेंट 8, राइट। माइक खोल के बोलो, अगर कुछ Yes, बोलो sir. तो सही ना। अच्छा जी, चलो, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करें? वी इज इक्वल टू D/T, राइट। सो द स्पीड Yes. इज 3 एक्सपोनेंट 8, राइट। एंड डिस्टेंस इज 150, राइट, एंड टाइम So कम्प्लीट what it be सर्कुलर। 300? No, it won't. Distance is 150, right? And you just replace T with V, so you'll get 3 exponent, right? Get it? But sir, they're asking the Or, time for the pulse to travel from the device to the wall and then back to the device. hmm. So, like you're saying you have to multiply it by 2, yes? Yes. Yes. वो तो बात की बात है ना, पहले इसको तो निकालो। Okay. So sir, the what will be the answer? क्या मतलब? 150 divided by 3 exponent 8, you get 5 exponent -7. Okay. And this is the time taken by the pulse to reach the wall. Okay. 3 exponent 8. Right. And जब वो वापसी आ रही होगी, so just multiply by 2. Yes, sir. So, So the direct way would be to multiply हाँ, 150 by यस 2. यस, सही है। अच्छा जी, आगे वाला भी कर लो। A progressive wave in the air has amplitude x, x0 and I. The amplitude of the wave increases to 3x0. What is the new intensity of the wave? So D. जी, क्या बोल रहे हो? D. वाई डी भाई, वाई नॉट ए? A equals to I square. ओके, सो आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट। Yes. बट इट कुड बी ए ना, बिकॉज आप वो रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हो ना। सो ये तो आप ये कर लो, I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर, राइट। सो Okay. so I1 is I, and A1 is 3 squared x naught, so that will give you 9x naught squared, and I2 would be unknown,
unknown, and the amplitude, what is the new intensity? Sorry. So this will going to be x naught squared. X naught squared is going to be a 9x naught squared, right? So if you just do cross multiplication, you'll get 9I is equals to I2. Fine. So let's move on to this question. मजे का question है ये. The variation with distance x to the displacement y of a transverse wave on the rope is shown at time t equals 0. The wave has a frequency of 0.5 Hz. A point x on the rope is marked. The diagram shows the original position of x and four new positions. What is the position of x at time t equals 1? Hmm. क्या बोलते हो? So अगर हम, अच्छा इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.5 हर्ट्ज ना. सो अगर हम टाइम पीरियड निकालें, सो टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज गोइंग टू बी 1/0.5, that gives you 2 seconds, okay? So which mean one complete oscillation takes 2 seconds, okay? And they're asking for half of the oscillation, right? So because they're asking just for the See, for 1 second, okay? तो क्या होगा? see, C. Okay, so you're saying if the point X is right here, so it will travel to this point, which is half the wavelength, right? ऐसा? yes, sir. But bro, um, and they're saying a point X on the rope is marked. The point on the rope is marked, right? Which mean X is going to be the so 0.5 second. नहीं, अबे, okay, that is, but x is going to be the rope's particle, okay, or x is going to be the medium's portion or something, right? तो वो मीडियम तो आगे नहीं मूव नहीं होता ना, मीडियम तो सिर्फ ऑसिलेट होता है, राइट? रिमेम्बर हमने वेव की डेफिनेशन में कहा Yes, था. sir. सही है. सो दिस x विल नॉट मूव फॉरवर्ड, रादर इट विल ऑसिलेट, राइट? तो वो नीचे जाएगा एंड देन और नीचे जाएगा, देन वापसी ऊपर आएगा एंड देन और ऊपर आएगा, राइट? As the wave progresses, right? Yes. So, Yes, yeah. sir. So like as the wave progresses, so after 0.5 second वो इधर आ जाएगा, सही. After 1 second वो यहाँ पे आ जाएगा, then after 1.5 second वो यहाँ पे आ जाएगा, and then after 2 second वो वापसी अपनी original position पे आ जाएगा x, right? So after 1 second वो इधर हो जाएगा b पे. Getting clear? Yes, sir. Perfect. चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन अभी कर लिया है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा. चलो देख लो ये भी देख लो क्या होगा. A transverse wave in a medium has a waveform shown where y equals to vertical displacement and x equals to horizontal distance. The speed of the wave is 20 centimeter second inverse. The particle of the medium oscillates vertically, which graph of vertical displacement y against time represents the motion of this particle. परफेक्ट. अच्छा जी, व्हाट डू यू से? अच्छा, if you can see that in the question they gave you in the form of distance, right? Which mean the graph shown in the question gives you the wavelength, right? But the graph shows in the answer gives you the time period, okay? So you first have to relate the wavelength and the time period with the help of the speed given, right? So if you use v is equals to f lambda, so speed it's 20 centimeter per second, right? And frequency is unknown, and lambda is 4 centimeter. तो centimeter में conversion की जरूरत नहीं है, 4 1 4 5 so we are getting the frequency as 5. So time period we're going to be 1/5, which is 0.2 seconds, okay?
So 0 0.2 is a time period. So that is going to be in A. And if we see the other option, so time period is 4, time period is 5. No, so only A is the correct option. Okay, is that clear? Yes, sir. Perfect. Okay, let's move on to this one. The diagram illustrates the position of particles in a progressive sound wave at one instant in the time. The speed of the wave is v. P and Q are points on the wave a distance L apart. What is an expression for the frequency of the wave? Hmm. Okay, क्या करेंगे भाई? अच्छा, can you relate L with a wavelength, please? L is how many wavelengths? This is a Sir, half compression, one and this wavelength. is the compression. Okay, so no, this is going to be one complete wavelength. So हाँ आधी होनी चाहिए lambda by 2, right? Remember? समझ आ रही? This is, Sir, can it not be with compression and refraction? but that's supposed to be a full compression and a full rarefaction. Okay. So a Okay. full rarefaction is this whole thing, okay? This is a half the wavelength, okay? And a full compression is going to be something जो कि पीछे से आ रही होगी, right? But यहाँ पे full compression rarefaction पे फिर compression नहीं दिख रही, okay? So you can either consider half of the compression and half of the other compression. So that half the compression from this side and half the other side combine up one whole compression, and in between the full rarefaction, right? The way you used to do Yes, sir. with a crust and crust, right? So a crust, a half of the crust from the right side, half of the crust from the left side, and a whole trough in between, right? So Yes, sir. so यहाँ पे हम कह सकते हैं कि L is going to be lambda over 2. Okay, fine. And if we relate the frequency now, so frequency is equals to V over lambda, V over lambda. Sorry. We basically want to relate, so this is going to be f and this is going to be lambda, so we can replace L is equals to L times 2, and lambda की जगह पे हम रख सकते हैं V over F. Okay, so F को subject बनाओ, so we'll get V over 2L, right? Clear हुआ ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो, so okay, ये कर लो. अरे wait. A wave moves along. Wait, okay, now visible. A wave moves along the surface of water. The diagram shows variation of displacement S with distance along the wave at time t equals 0. Which graph best shows the variation with time t of the displacement S of the point P on the wave? Hmm, what do you say? Any idea? The B, B. Why B? because it is the same graph, But nothing it's is not changing. going to be the same, right? Because look, which graph best shows a variation with time t of the displacement of the s of the point P on the wave? So point P is going to be like the a point related to the medium, right? तो मीडियम वाला जो पॉइंट है उसकी ऑसिलेशन आपने ग्राफ करनी है, समझ रहे हो? So if the P is right here, right? So as the wave progresses, P कहाँ जाएगा? Okay, please keep in mind कि P can only oscillate. वो ऊपर नीचे हो सकता है, okay? It cannot move Yes, sir. along. So P कहाँ जाएगा as the wave progresses? It's gonna go up and down. अबे नहीं ना, जैसे ही वेव शुरू होगी, जो नेक्स्ट इंस्टेंट में उसकी मूवमेंट होगी P की, वो क्या होगी? अप होगी या डाउन होगी? Up. Why? It has to complete the correct. कृष्ण वो पीछे वाली चीज को फॉलो कर रहा होगा, ऐसे ही. Yes. Okay, but also keep in mind that it is not its at its mean position, right? वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर रहा है, right? Yes, sir. So initially it is starting from some height.
Okay, but it has to move up as a wave progresses. So this is going down, this is incorrect. This is starting from zero, incorrect. It's starting with a distance but moving down, incorrect. This is correct. Okay, it's starting with a distance and then moving to the maximum position, और फिर जो है ना वो नीचे जा रहा है. Clear हो गया? Yes, sir. Perfect. चलिए आगे आ जाइए. पावर जनरेटर ये कर लो. The transverse wave on the rope has wavelength lambda and period t. The graph shows the variation of displacement of the particles of the rope with distance in the direction of travel of the wave at time t equals 0. हम्म. Particle x is labeled, which graph shows the variation of displacement of particle x with time t. सही. जनाब, आपके ख्याल में वैसे क्या लग रहा है? एक्स जो है वो भी मीन पोजीशन पे है एंड एज द वेव प्रोग्रेसेस एक्स से नीचे जा रहा है. ओके, सो आई वुड C, से कि B, बी. नो, no, इट शुड बी C. मीन एट मीन पोजीशन. यस. ओके, चलो देख भी लेते हैं इसको. सी आर आई एस. अच्छा जनाब, क्या है ये? चलो ट्राई दिस वन. वेट. A transverse wave is traveling along a rope of frequency 2 Hz. The graph shows the variation with distance of the displacement of the wave at time equals 0. Direction, which diagram shows the position of the wave at time t equals 0.5. 0.5. Okay, so they gave you the frequency in the question and they also gave you the wavelength mentioned in the question. Okay, so but अगर हम देखें which diagram shows the position of the wave at time t equals to 0.5 seconds. So 0.5 सेकंड का मतलब ये है कि आफ्टर वन वेव, बिकॉज 0.5, इफ यू कन्वर्ट 0.5 सेकंड इनटू फ्रीक्वेंसी और इफ यू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड विल बी 1/2, राइट, विच गिव्स यू 0.5. सो इसका मतलब है कि आफ्टर एग्जैक्टली वन वेव तुम्हें ऑसिलेशन दिखानी है, राइट. तो इसका मतलब है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन के अंदर ग्राफ मेंशन है वही ग्राफ होना चाहिए. दैट शुड बी टी. ओके, समझता है कि नहीं Okay. समझता है? क्या समझता है? Yes, I got it. पक्का के ऊपर से जा रहे हैं तुम? सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है? इतना अच्छा तो देखो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नींद आ रही है, मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता. Yes, sir, you're correct. अच्छा, तो फिर क्या नहीं समझ में आ रहा? No, sir, the question was easy, I understood. अच्छा. अम्म, चलो ये भी कर लो. माइक खोल के करना है बे. Which statement about the light wave and sound wave is correct? बोथ कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस, ऐसा तो नहीं हो सकता, साउंड को एयर No, चाहिए sir. होती है. तो वेवलेंथ सही हो गया. बोथ हैव द फ्रीक्वेंसी इनवर्स. अच्छा ऐसा होता है. Sir, एम्पलीट्यूड. हम्म. C, it will be amplitude squared. ओके, यस. बोथ हैव इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड नहीं है Correct. ना, तो सी भी गलत हो गया. एंड बोथ हैव ऑसिलेशंस Yes, sir. परपेंडिकुलर. वन इज परपेंडिकुलर, द अदर इज पैरेलल, सो ओनली बी इज लेफ्ट. ओके, Yes, sir. सही है ना. क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज कांस्टेंट, दैट इज 340, इन स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर और इन द वैक्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8, राइट. सो अगर आप कांस्टेंट को साइड में करो एंड रिलेट द रिमेनिंग वेरिएबल्स, तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी, राइट. अच्छा जी, ट्राई Yes, दिस sir. वन. The graph represents a sound wave. Which statement is correct? हम्म.
It's not C or D. It's not CDY, Sound wave is longitudinal. but the graph shows it is transverse. No? Also, that's displacement. Of what? The sound wave. अबे साउंड पार्टिकल, मतलब एयर पार्टिकल ऐसा बोलो. ओके फाइन फाइन, मान लिया, वेरी गुड हो गया. अच्छा जनाब. सो नाउ देर सेइंग they gave you the time period, so you can use it to find what, to find the frequency. Yes, so the time period is 20 millisecond. So yeah, and the frequency is going to be 1 over 20 millisecond. How much? 50 hertz. Yes. 0.05. हाँ है, मिली है सेकेंड है बे. मिली सेकेंड को कन्वर्ट किया क्या, एक्सपोनेंट -3 लगाओगे तो 0.05 जो 50 बन जाएगा. फाइन फाइन फाइन, सही है. चलो आगे आ जाओ. आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है. आई थिंक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. और अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने शो कर दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब स्पीड कितनी होने वाली है, 3 एक्सपोनेंट 8. अब ये तुम्हें फॉर श्योर सी बात है. तो ये वेव लेंथ टाइम पीरियड क्वेश्चन से आ जाएगा. सो यू कैन यूज दैट टाइम पीरियड एंड यू कैन यूज द स्पीड ऑफ लाइट टू फाइंड द वेव लेंथ एंड टू फाइंड द एम्पलीट्यूड. ओके, Okay, sure. सही हो गया. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपसे. ये कर लो जरा नीचे वाला 25. The speed v of waves in deep water is given by the equation v square equals to g lambda over 2 pi, where lambda is the wavelength of the waves and g is acceleration of free fall. The student measures lambda with frequency f of the number of these waves. Which graph should he plot to give the straight line through the origin? हम्म, बहुत टायर्ड क्वेश्चन है बताइए. फर्स्ट कन्वर्ट, और फर्स्ट रिलेट द लैम्डा विद द एफ फर्स्ट, इसी फार्मूला को यूज करते हुए क्या करोगे. So I didn't understand. ऑन. ओके, so v is basically f lambda, right? So if you replace v with f lambda, so f square and lambda square is equals to g lambda over 2 pi. Yes, and you can Yes, simplify sir. this, so you'll get f square is equals to g over 2 pi and lambda, right? Any problem? No, sir. No problem, right? Now they're saying the plot measures the lambda and the frequency of these waves. Okay, so if you know that if any equation of line follows y equals to mx plus c, so that will going to be the straight line. Yes. Now we can, if we say that f square is basically equal to g over 2 pi times 1 over lambda. Okay, and अगर हम ये कहें कि that this f square, if I plot it on y axis and if I consider this as a gradient and make this thing यानी 1 over lambda as x, so my graph, if I plot this relationship, so my graph would look like a straight line passing through the origin, provided that f square is plotted on the y-axis and 1 over lambda is plotted on the x-axis. Yes, getting? Yes, sir. Perfect. Okay, so that would be f square over 1 over lambda. Okay, चलो. अच्छा जी, आई थिंक ये हो जाएगा आराम से, ये भी हो जाएगा. इसमें आप देख सकते हो कि दैट द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग. Yes, फ्रीक्वेंसी sir. इज चेंजिंग, राइट, बिकॉज पहले वेव बड़ी थी, टाइम पीरियड बड़ा था, फिर टाइम पीरियड छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ. लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, जरा ये देख लो 29, ये भी आसान सा ही है. Which statement is correct for longitudinal waves but not correct for transverse waves? जनाब,
They can form a stationary wave. Both can form a stationary wave, light and sound. Okay, Lesson what are B. stationary wave? वो हम discuss करेंगे. They can only travel through the vacuum. Okay, not correct. Transfer energy. Okay, consist of peaks and troughs. Fine. But about D, क्या ये भी होता है? No. फिर? Uh, it's only for transverse. No, it's actually for both. Because अगर Surge, rarefaction, and compression. यस बट वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन किसकी होती है? वो पार्टिकल्स की होती है, राइट? इफ यू प्लॉट दोस टू पार्ट इफ यू प्लॉट दोस पार्टिकल ऑन द ग्राफ, तो वो पीक और ट्रफ बनेगी नहीं? Yes. जैसे अभी हमने पहले ऊपर But when देखा. both of them are, so, so it's wrong. So it will only be B. यस. अच्छा जनाब, चले. ओके, ये कर लो. A transverse progressive wave of wavelength lambda is set up on a stretch ring. The graph shows the variation of displacement y with distance x at a particular instant of time. The wave has displacement positive y1 at distance x lambda over 8. हम्म. समझ में आया? कुछ क्वेश्चन समझ में आया ऊपर से क्या? हाँ Uh, जी. I did not get it. ओके. So they basically mention lambda by 8 distance, okay? And they're saying what are the next two values of x where the displacement y is going to be plus y1, okay? So basically they had asked you to find the horizontal distance such that the vertical distance is equals to y plus 1, okay? Getting? Okay. So if you but they're saying they want positive y plus 1. So if you consider this point, so this is negative y plus 1, okay? Plus negative y, okay? So the second possibility is if we consider the distance from 0 to this point, okay? So that will going to be the another point where the distance y2 will going to be equal to y1, okay? And then the third point will going to be on this wave, okay? And that will have the same wavelength, okay? समझ रहे ना भाई? Yes. ओके. सो बेसिकली जैसे आप एक वेवलेंथ जा रहे हो आगे, देन यू हैव टू गो lambda by 8 wavelength more, right, to get the same distance. So if you do lambda plus lambda by 8, so you will approach to this point, okay? तो ये आपके पास आ जाएगा 8 lambda plus lambda, 9 lambda over 8. So 9 lambda over 8. So this is the first distance. And then you have to move 2 lambda and then lambda by 8. So 2 lambda plus lambda by 8. So 2 8 is 16, 17 lambda by 8. Okay, clear हुआ भाई? Yes. Perfect. This is B. Oh man, shits. Bro, एक और possibility भी तो बन सकती है. And that possibility is कि अगर वो यहाँ पे हो. क्या बोलते हो? So it will Because be the same or it will be different. no, it will be different. The distance will look. We want all those point जो कि यहाँ पे आ रहे हो, राइट? सो एक यहाँ पे आना चाहिए एंड द अदर वन शुड बी राइट हियर एंड द फोर्थ वन शुड बी राइट देयर एंड द फिफ्थ वन वो यहाँ पे आएगा, ओके? सो तो एक तो नाइन नाइन जो 9/8 था दैट इज करेक्ट, ओके? बिकॉज वो यहाँ पे आ रहा है, वो इधर आ रहा है, दैट इज 9/8, 9/8 लैम्डा. सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आना चाहिए, सो दैट विल गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2 माइनस lambda by 8, yes, getting? Yes, sir. So you will get 3 lambda by 8, okay, fine, sorry. चलो, मेरे ख्याल से बस करें, क्या बोलते हो? बहुत हो गई ना लंबी, क्वेश्चन भी Yes, खत्म sir. हो गए. चलो बस करते हैं. सो ये तो हमने निपटा दिया. सही, अब कोशिश करो कि इसको भी थोड़ा बहुत कर लो, सीआरओ कर लो यार, खुद से अगर कर सकते हो, सही है. तो Okay. उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन मैंने भेज दिए, उसको भी अटेम्प्ट कर लो एंड उसके अपलोड भी किए हुए क्वेश्चन, वो वहाँ से भी चेक कर सकते हो आप. अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ओके?
ओके सर। चले, चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।